she knew that travel handicap's Helen had the struggle agents. She herself had been almost blind as a child, though her sight had improved later. Soon after she arrived, arrived, she gave Helen a beautiful doll. Then she took Helen's hand and in deaf and dumb language, she spelled doll on Helen Plam. सुनो, तुम पढ़ने This का रीडिंग दो, was सुनो सुनो ना, तुम्हारी रीडिंग बहुत ही बहुत अभी सुधार की आवश्यकता है. You need to read loudly. Sir, Actually, the problem is that you are not understanding the hello, word. sir. You are could not pronounce properly the simple word. Sir, hello, sir. हाँ, तुम डिस्टर्ब करते हो. शुभ शुभ Hello. कैसरी, तुम बहुत डिस्टर्ब करते हो ऐसे बार बार बोल के. बोलो क्या बोलना है, बोलो. सर मैं रीडिंग कैसे करता हूँ सर? हम वो तो हम बाद में बताएंगे ना. हम लोग यहाँ रीडिंग के बारे में नहीं बता रहे हैं. जिसको बोल रहे हैं आप तुम सीखो, दूसरे को बोला आप पढ़ा रहे हैं ना. नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टूडेंट. हाँ पढ़ो, उसी को पढ़ो पैसे. फिर मिस सुलिवन रिमेंड काम. Miss Sullivan remained calm, prim and calm नहीं, calm, patient. calm, calm, firm and Calm patient. calm, prim and patient. She knew that tribal handicap Helen had to struggle against. She herself had been almost blind as a child, though her sight and improved later. Soon after she arrived, she gave Helen a beautiful doll. Then she took Helen's hand and in deaf and dumb language she spelled doll on Helen's palm. This was the beginning of Helen's education. Mr. Sullivan took every opportunity to spell out different words on Helen's palm. Helen was palm an नहीं बेटा, palm, intelligent and palm, palm नहीं, palm नहीं, palm, palm पढ़ते हैं, palm नहीं, palm. खैर छोड़ो, देखो यहाँ पर छोड़ दो. तो मिस सुलिवन, आप बताइए कोई टीचर को आप आपके घर में पढ़ाने आ रहे हैं, आपके साथ रह के पढ़ा रहे हैं आपको, आप टीचर को बंद कर देंगे और लॉक कर देंगे तो एनीवन कैन बी एंग्री. कोई गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा टीचर को? कैसे करते? ये सर टीचर को गुस्सा आएगा. लेकिन मिस सुलिवन उस टाइप की टीचर नहीं थी. ऐसी, दिस इज द नेचर ऑफ अ टीचर, दैट शी वाज अ काम, काम थी, एंड शी हैज फर्म एंड पेशेंट. शी हैज अ पेशेंस that she came here to teach Sir, her. हाँ sir, what means calm? काम मतलब एकदम शांत. काम का मतलब शांत. अब कोई तरह का फर्म माने एकदम डिसाइड कर लेना. पेशेंट माने, पेशेंट मतलब कि परेशान नहीं होना, आप एकदम धैर्य रखना. सो कहते हैं पेशेंट माने धैर्य रखिए, शांति बनाए रखना. हाँ, ये धैर्य ही नहीं कि भाई अब ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, स्टूडेंट ऐसे कर दिया, हम नहीं पढ़ाएंगे, आप यहाँ नहीं रहेंगे, आपको नहीं पढ़ाएंगे. ऐसा होता है ना, आदमी करता है ना. मान ली किसी टीचर को आप ऐसे कीजिएगा तो टीचर आपके साथ जरूरी नहीं ना है कि आपको रह कर पढ़ाएगा. इट इज नॉट नेसेसरी दैट ही विल टीच यू. She knew what terrible handicapped Helen had to struggle against. क्यों ऐसा की? Why she was having a patient? Because she knew it very well that Helen Keller is having some great problem, and she was struggling against it. She herself had been almost blind as a child. अरे यार तुम बीच में क्यों बोल देते हो? She herself had been almost blind as a child, though her sight had improved later. धीरे धीरे उसका साइट इंप्रूव किया था. शी वाज ए ब्लाइंड, बट स्लोली उसका धीरे धीरे साइट ठीक हुआ. सून आफ्टर, हर्षित बात नहीं करेगा कोई आदमी. डोंट सेंड एनी इमोजी, अंडरस्टैंड? इट्स वेरी बैड हैबिट. दिस वाज सून आफ्टर शी अराइव्ड, शी गेव हेलेन ए ब्यूटीफुल. एक बार उसको ब्यूटीफुल डॉल दी. चलो बेटा तुम डॉल लो. और डॉल को
देने के बाद then she took Helen's hand, उसका हाथ ली और हाथ पर क्या लिखी? And in a deaf and dumb language she spelled doll on Helen's palm. She spelled, स्पेलिंग लिखी D, हाथ में लिखी OLL, ऐसे लिख दी उसके हाथ पर. This was the beginning, यहाँ से शुरुआत होती है इसकी पढ़ाई का. Miss Sullivan took every opportunity to spell out different words on Helen's palm. कुछ भी है, कुछ कोई भी सामान को ली तो उसके हाथ पर लिखी कि दिस इज दैट थिंग. तो वो अंडरस्टैंडिंग करने लगी थी. डॉल है, फ्लावर है, या टूल है, या फोन है, या क्लॉथ है, या टी है, लाइक दैट जितना भी वर्ड था उसको उसके हाथ पर लिख कर समझाने लगी. और वो धीरे धीरे समझने लगी कि एक्चुअली व्हाट इज दिस थिंग. और इस तरह से उसकी पढ़ाई शुरू हुई. लेकिन आपको पहले ही बता दिए थे कि हेलेन तो बहुत इंटेलिजेंट थी, शुरू से वेरी सेंसिटिव थी. तो हैड एन इंटेलिजेंट एंड टायरलेस माइंड, वो थकती नहीं थी. कारण क्या था कि शी वाज ब्लाइंड, डीफ एंड इवन डम. तो शी कुड नॉट स्टोर द यूजलेस थिंग इन हर माइंड. फालतू फालतू चीजों को अपने दिमाग में नहीं रख, और जो उसको बताया गया सिर्फ उतना ही जानती थी. तो शी हैज ए ग्रेट ऑब्जर्विंग पावर about a word or thing and whatever is taught. जो भी पढ़ाया जाता था उसको वो अच्छा से समझ लेती थी. इसीलिए हम लोग कभी कभी बोलते हैं स्टूडेंट लोगों को कि you should not try to store useless thing, worthless thing in your mind. You should try to keep your mind vacant to store good things, beautiful things, useful things in your mind. And generally, when you go outside and talk with your friends and you talk useless things to them, and that is stored in your mind, and your mind is already full, then how do you grasp the things which is taught in the classroom? तो उन चीजों को आप कैसे रखेंगे? जैसे आप मोबाइल में बोलते हैं कि स्टोर फुल हो गया, तो स्टोर को आप खाली करते हैं तब उसमें मेमोरी में आता है. तो आप अपने दिमाग में अगर फालतू फालतू चीजों को स्टोर करेंगे कि उसने ऐसा कहा, उसने वैसा बोला, वो ऐसे क्यों किया, ऐसे क्या किया, आज खेलने नहीं गए, तो दैट थिंग्स शुड नॉट बी स्टोर इन योर माइंड. कीप योर माइंड हेल्दी एंड कीप द प्लेस फॉर योर एजुकेशन एंड स्टडी. So Helen had so that's why he was having an intelligent mind and tireless. But the time she was 7, she was learning to read and write and count in Braille. Braille is you have already taught, explained about that. This is an instrument through that a blind child can read. Braille एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू ब्लाइंड चाइल्ड लिखना और पढ़ना सीखता है. यस सर, जिसे लुइस ब्रायली ने निकाला था. हाँ, लुइस ब्रेली ने निकाला था. वेरी गुड. She had also invented over 60 different signs with which she could talk to her family. और अब देखो क्या यस थी, सर, जिसे टच करने से फील होता है वर्ड. तो यहाँ पर क्या किए, नहीं वो तो ठीक है, ये अपने ढंग से कुछ इन्वेंट की. जैसे किसी से खाना मांगना है, चाय मांगना है, या आपको बैठना है, या कहीं जाना है, या कुछ कहना है, तो that is that thing is stored. ठीक है, वो उसमें स्टोर होता था. वो अपना मतलब साइन को डेवलप की और उस साइन से क्या करती थी, वो अपना बात को रखती थी. मोस्ट डीफ पीपल कैन नॉट टॉक. आप जानते ही हैं कि डीफ जो होता है वो बोल नहीं सकता है. लेकिन क्या था, बट हेलेन वाज डिटरमाइंड टू लर्न. इट टूक हर ए लॉन्ग टाइम and she made many mistakes because she could not hear what her teacher was saying. तो अब हम पढ़ा रहे हैं आपको हेलेन किलर के बारे में, आप कुछ सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं. तो यू विल डू सो मेनी मिस्टेक्स, and not only you will do mistake one time, twice and thrice, you will do the same mistake several time. बहुत बार आप गलती करेंगे, और उस गलती को कौन सुधार रहे हैं, आपके टीचर. एंड द टीचर इज हैविंग ए पेशेंस टू टीच यू. शी केम with you,
she wanted to teach you, so she had been teaching her gradually and giving her full effort to make her educated, to educate her. So that's happened in the life of Helen Keller. So बहुत सारा mistakes करती थी. She could not hear, or that's what that. But she did learn to talk. My goodness, it was her intelligence, not only in English, but in French language also. She learned French language as well as English language, and she can talk in both languages. Now, my dear student, it is a very surprising result for the teacher that a teacher had been teaching her in that way, and she has been performing very well in her getting education. This remarkable girl, now the word is written remarkable girl, insisted on studying in a school for normal girls and later on graduated from Radcliffe College. She thus became the first deaf-blind person to graduate from a college. अब वो क्या की? She insisted her family members that, okay, please take my admission, give my admission in a good school, good college. And she got her graduation, and she was the first child who had graduated from having such a disability of severe disability, you can say that, deaf and dumb and like that. Helen Keller lived a long, happy and fruitful life. Helen Keller lived a long, happy and fruitful life. अब आप सोच लीजिए कि कितना अच्छी जिंदगी थी. She spent more than 50 years trying to help other physically challenged people all over the world through counseling. And you will surprise that this girl had been helping the child who are having such type of a disability or any disability, not only in his own country, in her own country, but throughout the world. So, and she had been doing this thing. She has been doing all these things through counseling. And you should surprise to know that there are several people who had consulted her. She had she guided them, encouraged them, and that's why she is one of the achievers in the chapter of achievement. In her travels around the world, she also visited India. She died at the ripe old age of 88. My goodness. Ripe old age of 88. So she died at the age of 88. You can understand she lived a very long life. So my dear students, if you want to live a happy life, if you want to study, first you must be determined and firm to get your education. Or otherwise, it is very difficult to survive in this world. That's all for this chapter. Now complete B2 yourself. Ananya, second. Yes, sir. Complete this B2 only, because I have only 5 minutes time. Write down the profile of Helen Keller. Name, write down there. Helen Keller in capital letter. Write down, everybody will complete it. Sir, date of birth? You know, you try to 27 know. June 1820. I will not tell you. Everybody wants ready-made answer. Ready-made everything. Ready-made Sir, I eating. have met B2.
B2 completed. Very good. Leave them completing other students. सर Let मैं अभी them कंप्लीट कर complete. चुका हूँ। ठीक है, जो और नहीं कंप्लीट किया कंप्लीट करने दो पहले उसको। सभी लोग अपना अपना कंप्लीट करेगा। किसी को सबको आंसर ही बता देंगे, सब कुछ हम दे ही देंगे तो तुम क्या करोगे? ये तो बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है जिसमें बहुत परेशान होना है। कंप्लीटेड? आदित्य रंजन, हेलो आदित्य रंजन, यस सर। कंप्लीटेड? सर साकेत कुमार, प्राची, अनुपम रंजन, सर अमित कुमार, कंप्लीटेड? नो सर। कंप्लीट? नो सर। मनीषा, साकेत कुमार, ईशु कुमार सिंह, ये सर कंप्लीट है सर। चलो ठीक है, कंप्लीट है, जिसका नहीं है उसको बोल रहे हैं। Now I am asking the question here. Name, Helen what have Keller. you done? Helen Adams Helen Keller. Helen Keller. Not full, write down full name. Helen Adams Keller. Lance Keller. It is written Helen Adams Keller. Keller नहीं, Keller पढ़ते हैं बेटा इसको। हाँ। Yes. ओके सर। Next, date of birth. 27 June 1880. 22 June 1880. Address. Alabama, USA. Alabama, USA. Alabama, USA. Nationality. American. American. Qualification. Bachelor BA. of Arts degree. ग्रेजुएट लिखो ना, ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन। क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। ओके सर। आप ग्रेजुएशन लिखिए। यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है आर्ट में किया हुआ है ग्रेजुएशन? कहीं लिखा हुआ है क्या? आपने मन से बना दिया, आंसर खोज लिया कहीं से? आपकी जो नो बुक सर। हुआ है, आप बुक के अनुसार देखे, चुपचाप लिखा हुआ पर्सन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ए कॉलेज, बस ग्रेजुएशन लिखिए। क्वालिफिकेशन में लिखिए ग्रेजुएशन। लैंग्वेज क्या हो गया है? इंग्लिश एंड फ्रांस। फ्रेंच। फ्रांस नहीं, फ्रांस का लैंग्वेज कहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज। सर इंग्लिश ग्रेजुएशन और क्या फ्रेंच। क्या हुआ? क्वालिफिकेशन लिख दिए। क्वालिफिकेशन लिखे, लैंग्वेज लिखो। यस सर। इंग्लिश एंड फ्रेंच। फ्रेंच। हाँ। फिजिकल डिसेबिलिटी अनन्या, deaf, dumb and blind. Write down deaf, dumb and blind. It's a सर rare. स्पेलिंग बोल। देख के लिखो, deaf, dumb and blind. Written everyone. Prachi, Yes, sir. यस सर। Written. यस सर। Ananya first. Written. यस सर। Now come to the सर रिटर्न। profession. What was her Author. author? Write down author. What, यस sir? सर। राइटर लिख दो या ऑथर लिख दो?
Yes, sir. ऑथर लिखने Author लिख दिया sir. हाँ लिख दिया। तो ये हेलन केलर जो है ना, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट अचीवर में है, और आप देख सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में फोटो दिया हुआ है साइड में, ठीक है ना। तो यू आर गोइंग टू कंप्लीट B3, राइट डाउन द होमवर्क, एवरीबॉडी राइट डाउन द होमवर्क, B3 and after that we will talk tomorrow about the जो बुक लिखी थी, उसने आर्टिकल लिखा था माय फ्यूचर एज आई सी इट, टुमारो इट विल बी टॉट, इट इज गिवन हर फीलिंग्स in this book. So I hope the student will read it yourself and complete that one. Even A4 and B5, right on B5, you are going to complete B5 also by reading it about the some extracts. Okay. Okay. So okay, you will complete yourself, and then we will come on the next Sudha Chandran. We will talk tomorrow about the Sudha Chandran. Not tomorrow is tomorrow is not possible because tomorrow is already 26th January, Republic Day, and I request all the students that they have to watch the 26th parade in our capital Delhi. You should also, there are so many programs expected to come on that day, so you can watch the parade and the lines and the way how they honor the others people, how the vehicles are passing, how the parade is going on. So you can see everything's there on your TV. Understand? You must watch it and see it. That's how सर the पूरा function B5 is तक going. बनाना है How the function is going. So, okay, my dear students, any problem regarding this chapter, you can ask me immediately. Any problem? Tell me. 1 minute is left for you. No, sir. So, next day again, we will talk about that.